All right, guys. So, which one is more important, learning or environment? So, listen to me very, very attentively because understand one thing, God has created fish, but fish is a great swimmer. Yes, no, no, yes, yes. Yes, Okay. But fish doesn't need to learn swimming lesson. Yes, no, no, yes. Yes, sir. yes, God has created birds, but bird has has nothing to do with flying lessons. They are the great flyers. But the game is if you keep fish on land, fish is considered as untalented. If you put bird into water, the bird is untalented or underperformed. So, ladies and gentlemen, success is not a game of luck, or success is not a game of your fortune. Actually, the success is a game of right and correct environment. Let me repeat, a right and correct environment. The environment actually, what is that right environment and what is that correct environment? The environment that enhance your hidden talent, that is the right environment. But that apparent environment that you consider is a right environment, that is not the right environment. ध्यान से सुनिएगा, वो इन्वायरमेंट सही और करेक्ट होता है जो आपके टैलेंट को, हिडन टैलेंट को या एक्स फैक्टर को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करे और अकॉर्डिंग टू दैट उसको ग्रोथ प्रोवाइड करे, उसको वो सिस्टम प्रोवाइड करे, एंड दैट इज द इन्वायरमेंट इज एक्चुअली द राइट इन्वायरमेंट. So, the game, how would you find the right environment? Nobody can find the right environment unless and until he realizes who or she is. Right? For that, you need an expert. For that, you need a mentor, coach, right, trainer, teacher. Only they can help you, the true one. I'm mentioning the word the true one. Only they can help you to realize who you are. The other day, I was sharing the example of that boy who has a big ears, big nose, and people used to make a fun of him because he was looking different. And he was so depressed because people used to make a mockery at him. But there was a person who identified his talent and put him into water and took him into and encouraged him for a swimming. And that boy become the gold medalist 12 times in swimming, Olympic winner, and he is none other than Michael Phelps. So, ladies and gentlemen, the right environment comes by acknowledging or identify your X factor and the true talent. And that environment will help you. And now that learning actually make you strengthen with your skills. Skills come later because your learning help you to strengthen your skills. That learning give you the process. How would you grow in that environment? Right? So some of you has rightly said that if you don't have a right environment, keep learning because learning help you to get connected with the people and get connected with the right people that will help you to get the right environment. And before that, I would say that you should have that burning desire to do something in your life because that burning desire actually develop your frequency vibration and that curiosity, which is more important to attract the right environment, right? So ध्यान से समझिएगा सबसे पहले if
what should be the sequence? The sequence is that जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रखो, एंड आई कॉल इट द बर्निंग डिजायर। देन जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, जो भी कर सकते हो उस मोमेंट पे वो करो। डोंट वेट फॉर परफेक्ट इन्वायरमेंट और अ परफेक्ट मोमेंट। करो, क्योंकि देर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट इन्वायरमेंट। करते जाओ, जिस जिस लेवल की आप औकात बनाते चले जाओगे, उस इन्वायरमेंट में आप बाय डिफॉल्ट पहुंचते चले जाओगे। सो कभी भी ये ख्याल आया आपको जीवन में ना कि मेरी किस्मत सही नहीं है, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास उतनी अच्छी स्किल नहीं है जो सफल होने के लिए चाहिए, तो मेरी बात याद रखना। इट इज नॉट अ गेम ऑफ लक, इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट इज अ गेम ऑफ द environment that help you to identify your true talent। तो जिंदगी में वही लोग अटकते हैं जो अपनी जीवन का मकसद किसी और के मकसद को देख के आइडेंटिफाई कर। वो इंसान अटक जाएगा क्योंकि उसको इन्वायरमेंट भी सही मिलेगा ना। सो क्या होगा, वो अपने उस फैक्टर को स्केल अप ही नहीं कर पाएगा, उस टैलेंट को स्केल अप ही नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट आ जाए। सो इट इज नॉट द इन्वायरमेंट। आपको अगर सही, आपके अंदर जो टैलेंट है पहले उसको आइडेंटिफाई तो करो, उस एक्स फैक्टर को तो आइडेंटिफाई करो, तभी तो वो इन्वायरमेंट आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। राइट। सो कहीं पर भी रहो, अपने उस एक्स फैक्टर को आइडेंटिफाई करो। जिम जाने से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर वो चाहत नहीं है खुद को बेहतर करने की, बेटर शेप में लाने की। तो जिम पहुंच के भी कई सारे लोग जिम नहीं जाते हैं क्योंकि वो ताकत ही नहीं मिलेगी ना। वो ताकत इसलिए क्योंकि आप किसी और की बॉडी देख के, या ही इज लुकिंग सो, यू नो ही हैज अ बीफी मसल्स एंड ही इज फ्लैक्सिंग ऑल हिज मसल्स ऑल द टाइम, आई वांट टू बी लाइक हिम। नो, एक समय आएगा आप रुक जाओगे, बिकॉज योर पर्पस इज नॉट क्लियर, योर दैट एक्स फैक्टर इज नॉट क्लियर। सो वो चीज आप कभी नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट आइडेंटिटी, इन्वायरमेंट उसको ढूंढो। और इन्वायरमेंट की अलग अलग डेफिनेशन है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। जब आप किसी इंसान से कनेक्ट होते हो, दैट इज अ इन्वायरमेंट। जब आप किसी ऐसी जगह में जाते हो जहां आप डायरेक्टली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, दैट इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंट, लाइक अ जिम, लाइक अ डांसिंग थिंग। राइट। और गलत इन्वायरमेंट भी होते हैं। बस मैं तो उसको देख रहा था, अरे मैं तो बस उसको सुन रहा था। यू डोंट नो कि जब आप उसको देख रहे थे, जब आप उसको सुन रहे थे, तो आपका एक्चुअली द सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड सीख रहा था। एंड बाय डिफॉल्ट वन डे यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट। ठीक है। सो उस इन्वायरमेंट को ढूंढो जो, नहीं, इन्वायरमेंट से पहले अपने उस एक्स फैक्टर को जानो। इसलिए बीच में एक्सपर्ट मेंटोर के साथ कनेक्ट रहो। नहीं तो आई हैव नोटिस दैट पीपल कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पे बहुत सारा पैसा लिया जाता है, लेकिन वहां के भी बच्चे कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके उस एक्स फैक्टर को उनसे कभी मिलाया ही नहीं गया है। और वहीं सरकारी स्कूल में कुछ ऐसे गजब के टीचर हुए हैं जिन्होंने ये बोला है कि बेटा तू ये कर सकता, तेरे अंदर ये खासियत है, और वहीं से बड़े बड़े लोग निकले हैं। राइट। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर दैट एक्स फैक्टर। और उस एक्स फैक्टर के लिए सबसे पहले मेंटोर, गुरु, एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, नहीं तो समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। लाइक मिस्टर प्रधान हैज मेंशन दैट एग्जांपल ऑफ 12th फेल्स और दैट आईपीएस ऑफिसर। वो अपने घर को छोड़ के दिल्ली क्यों गया? क्योंकि somebody was there, he was, कि जिसने ये कहा था बेईमानी छोड़ो, ईमानदार बनो, तब तुम जो चाहो वैसा बन पाओगे। आईपीएस ऑफिसर बनना है तुम बन जाओगे, लेकिन दैट अगर वो गाइडेंस नहीं होती तो वो ऑड से लड़ने की ताकत नहीं आती, वो टफ टाइम से लड़ने की ताकत नहीं आती, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, तो वो दिल्ली तो बाद में जाता। मछली को जिंदगी भर जमीन पे रखो तो वो अनटैलेंटेड ही कहलाएगी, और बर्ड को हमेशा
पानी पे चलाओ तो वो हमेशा अनलकी कहलाएगी। At the end, I just want to tell you, follow the process. The process is identify your X factor. जिस चीज के लिए आप बने हो उस फैक्टर को फॉलो करो, गेट इनटू द राइट इन्वायरमेंट, एंड टू ग्रो इन दैट इन्वायरमेंट कीप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अ एंडलेस प्रोसेस। इन्वायरमेंट आपको हेल्प करना बंद कर देगा इफ यू डोंट हैव अ लर्निंग माइंडसेट। So these three things will help you to follow it and the game change. So you are not unlucky. You are not untalented. You are just a step away realizing your X factor and that and right and correct environment according to that factor. Thank you. All the very best. Thank you, sir.